What makes Morocco the most visited country in Africa? وہ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا میں صرف موروکو میں پائی جاتی ہے؟ اسرائیل کے یہودیوں کا موروکو سے کیا تعلق ہے؟ اور مزید سرپرائزنگ اور فیسینیٹنگ فیکٹس اباؤٹ موروکو آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی۔ مائی کنٹری موروکو، جس کو اردو میں مراکش کہا جاتا ہے۔ بائی دا وے، مراکش ایک شہر کا نام ہے موروکو کا۔ موروکو ایک نارتھ افریقن ملک ہے، ویری نیئر ٹو اسپین، جس کا کیپٹل رباط ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر کازابلانکا ہے، میرا شہر۔ موروکو کے دو کوسٹ لائنز ہے، the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Every 6th of November, Moroccans celebrate the anniversary of the Green March, one of the miracles of the 20th century and one key moment in Morocco's peaceful history. The 49th anniversary of the Green March is an opportunity to proudly recall one of the glorious events in the history of Morocco. Thanks to the genius of its architect, the late His Majesty King Hassan II, the kingdom was able to recover its Saharan provinces and thus complete the decolonization of its territories. At the call of the late sovereign, more than 350,000 civilian volunteers from all over the country converged in an organized and peaceful manner towards the south of the kingdom, crossing the chimerical borders and proudly hosting the national flag in the sky of this territory that has always been a part of the kingdom. The whole world witnessed this exceptional event and thus put an end to the Spanish presence in the Moroccan Sahara. Nearly half of a century later, the spirits of the Green March remains alive in the hearts of Moroccans who are determined more than ever to make the Saharan provinces a true pole of growth and prosperity and a haven of peace and dignity. There was a conflict over Western Sahara, and on the 31st of October of last year, the UN Security Council declared the Western Sahara as part of Moroccan territory. Since then, and every year, Moroccans are going to celebrate on the 31st of October of every year a new national day, the Unity Day. Morocco is the second oldest kingdom in the world after Japan. Morocco ke first Hukumran was a descendant of the Prophet Muhammad's grandson Hassan ibn Ali, and his full name is Idris ibn Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Morocco has never been ruled by Ottoman Empire. Morocco کے اوریجنل پیپل جو اسلام سے پہلے اور عرب کے آنے سے پہلے موروکو میں رہتے تھے وہ ہے امازیغ. تو کیا موروکن پیپل عرب ہے یا امازیغ؟ Moroccans are Amazigh or Arab. So we couldn't be both, because I'm telling you, there is no Moroccan in here that's fully Amazigh or fully Arab. We get mixed. Like the Arabs get here to spread Islam like 12 centuries before, something like that. And when the Amazigh people accepted Islam and stuff, people got mixed. Like, look at me, my father is Arab, my mother is Amazigh, Rifi. Like, you can never find a Moroccan that's fully Amazigh or fully Arab. It's impossible. Like, you're gonna be 50-50, 70-30, but we both, we love each other. We're not racist against each other. Oh. We are Muslims. We are one ummah. That's what we care about. In Morocco, exactly, in Emil Shil, in Atlas Mountains, ہر سال کلیکٹیو میرج فیسٹیول ہوتا ہے۔ اس فیسٹیول کے پیچھے ایک لیجنڈ ہے، a legend of two young lovers جن کے قبیلے ان کی شادی کے خلاف تھے، تو ان کے آنسوؤں سے وہاں دو دریے بن گئے۔ ایسلی means groom and Tislit means bride. Moroccan cuisine has been voted as the best in the world. The number one cuisine across the planet is Moroccan cuisine, has been crowned the champion. Congratulations to the Moroccan cuisine. So many Hollywood movies like Gladiator, Kingdom of Heaven, Game of Thrones, and Bollywood movies like Tiger Zinda Hai, Agent Vinod, Jagga Jasoos, and Thugs of Hindustan had been shooted in Ouarzazate, the Hollywood of Morocco. Morocco is a leader in renewable energy due to its abundant solar and wind resources, ambitious targets, and significant investment in projects like the Noor Ouarzazate solar complex. Morocco has something everyone else wants. It's phosphate. Russia is the biggest country in the world. China is the most populated, and the US is the richest. And then there's Morocco,
which isn't exactly a global superpower. But it is one of the most important places in the world because of phosphorus. Morocco has the best beautiful and luxurious architecture and traditional dress. आपने Moroccan tiles and kaftan के बारे में लाजमी सुना होगा. argan oil के बारे में भी सुना होगा जिसको liquid gold कहते हैं. A product native and exclusive to Morocco. सदियों से Moroccan ख़वातीन उसको skin and hair care में यूज़ करती आ रही हैं. आज वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है. Morocco was the first country to recognize the United States. One of the first countries to recognize the United States as an independent nation was a Muslim country, Morocco. First nation to recognize my country was Morocco. No country has been a friend of the United States longer than Morocco. You were the first nation to recognize us back in 1777. बचपन से मैं जानती हूँ कि एक माइनॉरिटी ऑफ जूज़ मोरक्को में रहते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता था कि हिटलर ने जो उनका हॉलोकॉस्ट किया था उसके बाद से ये लोग पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए तो मोरक्को में भी सेटल हो गए. लेकिन जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जूइश हिस्ट्री इन मोरक्को 2500 साल पुरानी है, यानी कि इस्लाम से बहुत पहले. Since the destruction of the first temple and the fall of Jerusalem, followed by the Spanish acquisition in 1492. इसराइल के बनने के बाद in 1948 पूरे अरब वर्ल्ड में एंटी जूइश सेंटिमेंट्स बढ़ते गए. So most Moroccan Jews felt unsafe and unwanted, so they immigrated to Israel. And Jewish population in Morocco dropped from 250,000 to 3,000 only. Moroccan currency is dirham, but in local markets you will hear rial and franc. So 50 dirhams are equal to 1,000 rial and 10 dirhams are equal to 1,000 franc. The face of the oldest known human whose remains were discovered in Jebel Urhoud, Morocco, has been reconstructed by scientists, revealing his appearance for the first time in 300,000 years. The Kingdom of Morocco ranks first in the world in the number of people who have memorized Quran. According to UNESCO, the number of Hafiz in the country is more than 1.5 million men and women. मोरक्को के शहर फैस में दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जामिअत अल-क़रवीन. इस वक्त हम फैज शहर के अंदर हैं और फैज शहर में एक यूनिवर्सिटी है जिसको जामिया अल-क़रवान कहा जाता है, करवाइन भी कहा जाता है. और मैंने इसका मतलब बताया था आपको कि ये लफ्ज़ कुरान से निकला और बदल के करवाइन या क़रवान बन गया. और दूसरा कारवान से, कारवान होते हैं ना जो चलते थे, उससे ये लफ्ज़ निकला. अच्छा, वो क्यों निकला कि इसलिए कि कुरान की तरफ निस्बत करते हुए और तलबा आते थे दूर दराज से कारवान में सफ़र करते हुए, इसलिए इसका नाम जामिया अल-क़रवान. एक और दूसरा ये कि ये अल-क़रवान शहर है ट्यूनिस के अंदर. जो असल इसकी निस्बत है वो ये है कि ये शहर ट्यूनिस के अंदर है और मोहम्मद अल-फेरी जो है बहुत अमीर आदमी था ट्यूनिस का और वो वहाँ पे रहता था अल-क़रवान के अंदर. फिर ये है कि वहाँ कोई सिविल वॉर हुई, कोई जंग हुई जिसकी वजह से उसने वो मूव कर गया वहाँ से और यहाँ फैज़ आ गया था. और फैज़ का एक बड़ा चर्चा था, आपको पता है इदरीस द सेकंड ने इसको बिल्ड किया था और इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा था क्योंकि इस्लाम फैल रहा था यहाँ पे माशाल्लाह. तो उसकी 2 बेटियाँ थी. जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने बड़ी जायदाद छोड़ी अपनी बेटियों के नाम. तो उनमें से एक बेटी का नाम था फातिमा अल-फेरी और दूसरी का नाम था मरियम. फातिमा ने क्या किया कि मदरसा बनाया और एक मस्जिद बनाई और ये मस्जिद थोड़ी अरसे के अंदर और मदरसा थोड़ी अरसे के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया और पूरे आलम इस्लाम से दूर दराज से तलबा यहाँ आना शुरू हो गए और यहाँ पे पढ़ना शुरू हो गए. और मरियम ने जो है वो मस्जिद बनाई, साथ एक मस्जिद है और ये मस्जिद भी है और मदरसा भी है. और उन दोनों बहनों ने माशाल्लाह अपने वालिद की पूरी जायदाद को वक्फ कर दिया इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए. तो ये है दुनिया की ओल्डेस्ट सबसे पहली यूनिवर्सिटी. सो ये थी आज की वीडियो. इन 20 फैक्ट्स में से आपको कौन से फैक्ट्स पहले से आप जानते थे और कौन से फैक्ट्स आपको पहली दफ़ा इस वीडियो में जानने को मिली है, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा.
اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.